सर फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अनम है, अनम शफीक। मैं लेक्चरर हूँ इन एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी UIMS यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में। हमारे साथ जो आज गेस्ट स्पीकर हैं, रिसोर्स पर्सन हमारे आमिर सर हैं। सर आमिर रजा नाम है इनका। इनका बड़ा डाइवर्स एक्सपीरियंस है, मोर देन 25 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट लेवल पे। कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्होंने काम किया है। बड़ा ही डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है। जैसे कि आपको नाम का पता है, आज के वेबिनार का टॉपिक इज अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड सर का बड़ा ही डाइवर्स एक्सपीरियंस है इन दिस रिगार्ड। काफ़ी सालों से वो इस एरिया में काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल ही इज सर्विंग एज एज अ VP इन HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक में काम कर रहे हैं। और सेक्रेटेरिएट एंड लीगल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इनके असाइनमेंट्स हैं, इसको देख रहे हैं। और इसके अलावा जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इनके जो प्रोफाइल की में ये जो जिसके लिए हमने इनसे इंसाइट्स भी लेंगे अबाउट कि जैसे ये जो भी हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस में थियोरेटिकली पढ़ रहे होते हैं ना, इसको ये प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होता हुआ देख रहे होंगे या करवा रहे होंगे या कर रहे होंगे। ये इसके बारे में हम इनसे मजीद जानेंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो ये इनका जो बैकग्राउंड है, जो इनका प्रोफाइल है, इज वेरी मच मतलब एक आइडियल इन्वायरमेंट कि जिसमें हम प्रैक्टिकली सीख सकते हैं कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं ये प्रैक्टिकली उसको होता हुआ देख रहे होंगे। So I'm looking forward towards this session. Sir, I welcome you on behalf of University Institute of Management Sciences, Arid Agriculture University. I hand over the session to you. आप अपनी presentation share कर सकते हैं and you can start. Thank you, Anaf. First of all, तो मैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने ये मुझे मौका दिया और प्रेजेंट करने का, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। सेकेंडली, मैं अनम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विच इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें मेनली मैंने कंपनीज एक्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स, कंपनीज ऑर्डिनेंस और प्रूडेंशियल रेगुलेशन से इंफॉर्मेशन गैदर करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अपनी नेक्स्ट हमारी स्लाइड पे चलते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस refers to having the appropriate people, processes and structure to direct and manage the business and affair of the company to enhance long-term shareholder values while taking into account the interest of other stakeholders. यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं इसकी हम नेक्स्ट थोड़ी देर तक इसमें डिस्कस करेंगे कि स्टेक होल्डर्स में हमारे पास कौन आ रहा है। Companies that are embrace the tenets of good governance, including accountability, transparency, and sustainability, are more likely to engender investor confidence and achieve long-term sustainable business performance. तो अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके चलते हैं तो इसके साथ हम अपनी कंपनी जो भी हम बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी आएंगी, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा और ये आगे हम मतलब ग्रो करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। मेनली द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये एक कंपनीज के ऊपर लिस्टेड हुआ, एप्लीकेबल हुआ इन 2003 फ्रॉम सिंगापुर, जिसके ऊपर द कोड aims to promote high level of corporate governance by putting forth principle of good corporate governance and provision with which companies are expected to comply. The practice of guidance complements the code by providing guidance on the application of the principle and provision and setting out best practice of the companies. Adoption of the practice guidance is voluntary. ये 2003 की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त ये वॉलंटरी इन्होंने एप्लीकेबल किया था, लेकिन उसके बाद फिर आस्ता आस्ता इसमें बहुत सारे चेंजेस आई टाइम और अब हमारे पास कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, फिर हमारे पास कंपनीज एक्ट है और बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है। बेसिकली मैं मेनली अपनी बैंकिंग फील्ड का, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा एक्सपोजर है, तो मैं उसी के रेलेवेंट्स में आपको कुछ गाइडेंस दे रहा हूँ। स्लाइड करते हैं। ये बेसिकली जब आप कोड ऑफ गवर्नेंस को लेके चलते हैं तो जो आप
कंपनी के लिए बेहतरीन solution होते हैं. With a well-governed company, better pays to perform over the long term. The code should not be seen as a burdensome, but should help companies by giving clear direction on good board and management practices that will help build investor and stakeholder confidence. For this outcome, a culture of substantive compliance rather than a checklist approach is crucial. A sustainably successful company is good for merit, stakeholders, employees, suppliers, customers, shareholders, as well as society at large. Corporate governance refers to the system of rules, practices, and processes by which a company is directed and controlled. It involves the relationship between various stakeholders such as shareholders, management, board of directors, employees, customers, and the wider community. Stakeholders mainly ये सारे इसके अंदर ये सब एक मिल के एक आपका स्टेकहोल्डर बनते हैं कि आपकी मैनेजमेंट भी है, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है, एम्प्लॉई जो आप बिजनेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली किसी कस्टमर आपको रिक्वायर्ड है, वो सारे, और जिसने मेनली आपको स्पॉन्सर किया है, जो आपका शेयर होल्डर है, ये सब मिलकर एक स्टेक होल्डर बन रहे हैं. The goal of the corporate governance is to ensure transparency, accountability, and ethical conduct in the decision-making process of a company. Next slide पे हम चलते हैं. Mainly अब हम बात करेंगे शेयर होल्डर की. A shareholder of the institution can jointly and severally protect, preserve, and actively exercise the supreme authority of the company. In general meeting, in accordance with the memorandum and article of association of the company and all other statutory regulations and guidelines governing the operation and affairs of the company. There are some classes of the shareholders. The sponsor shareholder है, profit shareholder है, institutional shareholder है, employees हैं, common और public है. कुछ कंपनीज होती हैं जिनके पास सिर्फ स्पॉन्सर शेयर होल्डर होते हैं, मतलब वो 5, 10, 15 शेयर होल्डर जिन्होंने मिलकर एक बड़ा कैपिटल इंजेक्ट किया और उस पूरी कंपनी को लेकर चल रहे हैं. कुछ इंस्टीट्यूशनल होती हैं, कुछ से अपनी एम्प्लॉइज को शेयर ऑफर कर देते हैं कि जी कुछ परसेंटेज उससे शेयर जो एम्प्लॉइज हैं उनका भी कुछ प्रॉफिट उनको गेन होता रहता है, उसमें कोई उनके बोनसेस वगैरह. और कुछ होती हैं जो कंपनी जैसे पब्लिक है, पब्लिक जैसे उनको फिर वो स्टॉक एक्सचेंज और उनके ऊपर भी वो लिस्टेड होती हैं, उनके कुछ शेयर्स मार्केट में फ्लोट होते हैं और उसके फिर रेट डिफरेंट, मतलब डिफरेंट तरीके से उनका थोड़ी सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे उनको थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. दे हैव जो हमारे शेयर होल्डर हैं, दे हैव अ ड्यूटी जॉइंटली एंड सेवरली टू एक्सरसाइज देयर सुप्रीम अथॉरिटी to ensure that only competent and reliable person who can add values to the institution's business are elected or appointed to the board of directors. Shareholder also ensure that the board is constantly held accountable and responsible for the efficient and effective governance of the institution. And change of the composition of the board of directors that does not perform to expectation or in accordance with the mandate of the institution. शेयर होल्डर्स मेनली आपका एक ओवरसी कर रहे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें उन्होंने अपने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ है और उसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर सब चीजें लेके देख रहे हैं कि कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो उसको रिमूव, मतलब उसको रिमूव कर सकते हैं, उसकी जगह पे कोई और डिफरेंट जो अथेंटिक है उस फील्ड के ऊपर प्रॉपर एडजस्ट हो सकता है या उसके ऊपर पूरा अप्लाई करता है, तो उसको वो दोबारा से अपने बोर्ड के ऊपर ला सकते हैं और कोई रिमूव करवा सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं. Power of shareholders. In exercising its power, the board must be concerned that the certain matters are required by law or shareholders agreements to be referred to the shareholder. These included but not are limited to the consideration of annual accounts, balance sheet, reports of the directors, auditor, appointment, and determining auditors' remuneration,
nomination of directors, amendment in memorandum article of association, or any other decision on capital increase या कोई merger है, कोई acquisition है, कुछ मतलब different उसमें powers है जो सिर्फ shareholder ही approve करेगा, तो फिर आगे company या जो भी आपकी institution है या कोई बैंक है वो उसको लेके फिर further जो laws and regulations है उनको follow करता हुआ उसको complete करता है। के बाद जो हमारा मेन इसमें क्या टॉपिक है शेयर होल्डर्स के बाद वो आ जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स को अपनी तमाम पावर्स दे दी और उस बोर्ड ने फिर उस पूरी इंस्टीट्यूशन या कंपनी या बैंक को लेकर चलना है और उसको उन्होंने अपनी एबिलिटीज और उनके साथ उसको टॉप पे लेके जाना है, जैसे जितना भी वो मैक्सिमम अपनी एफर्ट्स के अंदर शामिल कर सकते हैं। Board of Directors is a body of appointed members that jointly oversees activities of the organization, represent the interest of the organization stakeholders, and protect the organization's reputation. The board may comprise of a non-executive and executive director. Executive director वो हैं जो उस कंपनी के या इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय भी हैं और वो उसके डायरेक्टर भी बन सकते हैं, और नॉन एग्जेक्टिव उस कंपनी से बाहर से कोई जो शेयर होल्डर्स ने नॉमिनी किया हुआ है तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा। The board serves as an institution steward, being the apex oversight body interested protect the institution. It ensures that the company is managed in a manner that is consistent with agreed values and goals, and work to enhance the image of the institution, while playing an important part in shaping its image, prestige, and credibility. It's board's prime responsibility to prove the strategies necessary to achieve the institutional objective in light of the social mission of the organization, the competitive landscape, and risk inherent to business. Within the framework of its duty and responsibility, including those prescribed by the statute, regulations, and the articles of the institution, the board may delegate certain authorities and power to the board committees and or individual, including the CEO or CEO, Chief Executive, or Chief Operating Officer, or any other which they deem fit. Company shall ensure that the skill mix of the board is compatible with the objective, plans, and function of the companies, and that the board is in the position to give direction to the executive management and steer the companies in the desired direction. बोर्ड शैल हैव इसमें जो क्राइटेरिया है कि बोर्ड में क्या कौन लोग हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते, उसका एक थोड़ा सा मैंने आपको स्नैप शॉट दिए कि मिनिमम 7 मेंबर्स, और अगर वो सेम फैमिली से है तो 25% से ज़्यादा ना हो। उसमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फीमेल डायरेक्टर, और 25% से ज़्यादा पेड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कंपनी में नहीं होने चाहिए। चेयरमैन जो सीईओ नहीं हो सकता, मतलब कंपनी का सीईओ है तो वो कंपनी का चेयरमैन नहीं हो सकता। बोर्ड जो बैंक के लिए मेनली होता है कि एक बोर्ड मेंबर को आपने शेयर होल्डर्स ने नॉमिनी कर भी दिया है, then again they still need clarity or rather no objection from State Bank to perform on a board as a board of director. उसके लिए एक फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया टेस्ट रखा हुआ है स्टेट बैंक ने। उसमें तमाम एग्जेक्टिव जो आपके मैनेजमेंट है उन सब का भी फिट एंड प्रॉपर टेस्ट होता है और बोर्ड ऑफ मेंबर्स का भी। द board member and president chief executive are custodian of the public saving deposits with the company, as they should not only be persons of established integrity and track record, should also have necessary capacity, qualification, and experience to effectively undertake their respective responsibilities and functions in order to lead and steer the company as a commercially viable and socially responsible financial institution. State Company of Pakistan has formulated fit and proper test for selection
appointment, reappointment, renewal, and interim appointment of the board member and president, chief executive of the company, which prescribe the minimum qualification, experience, and integrity standard for companies, board member, and president, chief executive, and other executive members. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स. ये बहुत क्रुशियल होता है कि इनके डायरेक्टर्स को इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए. जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज है उसमें तो एक रेगुलेशन है कि अगर बोर्ड के ऊपर आपके कोई पर्सन आए हैं तो उनको एक डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एसेंशियल फॉर हिज एटलीस्ट इन द फर्स्ट ईयर. इट्स एसेंशियल के उसके बगैर अगर आपने पहले साल में अपने बोर्ड मेंबर की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं कराया तो वो एलिजिबल नहीं हो सकता फॉर नेक्स्ट ईयर. तो उसके लिए फिर हम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक किसी भी जैसे लंच वगैरह है या कुछ और इंस्टीट्यूट करवा रही है उनके साथ एक डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम का सेशन उनके साथ एडजस्ट करते हैं और फिर वो डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को फुलफिल करते हैं और फिर ऑन बोर्ड पे फिर वो क्योंकि अपनी उनकी जो स्किल मिक्स उनके एक्सपीरियंस होते हैं उनके साथ वो चाह रहते हैं कि बोर्ड क्या क्या कर सकता है और डायरेक्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी नॉलेज में नहीं होती बाज दफा. तो उसके लिए ये एक बहुत जरूरी चीज है. A director of a company shall act in good faith in order to promote the object of the company for the benefit of its member as a whole and in the best interest of the company, its employee, the shareholder, the community, and for the protection of the environment. A director of a company shall discharge his duty with due and reasonable care, skill, and diligence, and shall exercise independent judgment. Director of a company shall not involve in a situation in which he may have a direct or indirect interest that conflict or possibly may conflict with interest of the company. A director of a company shall not achieve or attempt to achieve any undue gain or advantages either to himself or to his relative, partner, association, and of such, if such director found guilty of making any undue gain, he shall be liable to pay an amount equal to that gain to the company. खैर वो अभी इस पे a director of a company shall not assign his office and any assignment so made shall be avoided. In addition to the preceding subsection, the Commission may provide for the extent of the duties and the role of the directors as may be specified. Any breach of the duty, default, or negligence by a director in contravention of the article of the company or any its policy or decision of the board may be ratified by the company through a special resolution, and the Commission may impose any restriction as may be specified. ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर. जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसी तरह ड्यूटीज भी इनकी उससे भी ज्यादा कह लें कि कंपनी के लिए मैनेजमेंट की उसकी बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है. First of all, define vision and mission and set strategic goal and objective for the company and or any business whichever they are looking to. Approval annual business plan and monitor its progress on regular basis. Undertake and fulfill their duties and responsibilities, keeping in view their obligation under the applicable laws and regulation. उसको अपने मतलब जैसे आप कुछ बैंक के अंदर कंपनीज ऑर्डिनेंस सपोज या बैंकिंग कंपनीज एक्ट है उसके अंदर कोई चेंज आती है उसको उन लॉज एंड रेगुलेशन का अगर आइडिया नहीं होगा तो उसकी वजह से भी उसको प्रॉब्लम आ सकती है. Ensure that the company maintain high standard of disclosure, transparency, fair treatment with consumer and compliance with rules and regulation. Attend training program जैसे भी मैंने बताया कि at least first week within the first year
of a directorship to be able to play an effective role as a director on the board of company. However, these directors who have already attend such program or have served on the board of any foreign corporate body shall be exempted from such training program. Induct appropriate qualified and experienced CEO and management and assess their performance. Recommend a reappoint of chief executive, president, and member of the board on the basis of their performance and ensure appropriate skill mix in the board composition. मतलब ना सिर्फ बोर्ड मतलब अगर जैसे चेयरमैन है तो वो सबकी परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट करता है अलॉन्ग विद देयर मैनेजमेंट जिनके ऊपर वो बोर्ड है उन सब की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर होती है. Ensure that the succession policy is in place for key management positions. Clearly define the authority and key responsibility of both the directors and the senior management without delegating its policy making power to the management and shall ensure that the management is in the hand of qualified person. Approve and ensure implementation and compliance of interim policies relating to business and operations. Moreover, existing policies shall be reviewed and updated periodically or whenever circumstances justify. Hold frequent regular meeting, not less than once every quarter. The individual director of a company shall attend at least half of the meeting held in फाइनेंशियल ईयर. नॉर्मली हर क्वार्टर की जो अप्रूवल है वो बोर्ड से आप अपने फाइनेंशियल्स की होती है. आप बोर्ड को अपने बताते हैं कि जी हमारा इस क्वार्टर में ये हमारा प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये हमारी बैलेंस शीट है, तो उसको वो एक सी करते हुए उसको अप्रूव करते हैं. The board should ensure appropriate MIS for receiving sufficient information from management on the agenda item well in advance of each meeting to be able to effectively participate in the contribute to each meeting. Normally, आप 14 days या 21 days different scenario में different company के साथ different variation है. जो हमारा कॉर्पोरेट कंपनी चेक कहता है उसमें हमें 21 दिन पहले हमने अपने बोर्ड को बताना है कि मीटिंग हम एक फला दिन पे मीटिंग है, फला टाइम है, फला वेन्यू है और उसका ये एजेंडा आइटम है. मतलब उसमें एजेंडा आइटम में कि क्या लेके जा रहे हैं, कोई पॉलिसीज लेके जा रहे हैं, कोई आप फाइनेंशियल्स लेके जा रहे हैं, कोई और ऐसा मैनेजमेंट ने या बोर्ड ने आपको लास्टली कोई चीज़ ऐसी आपसे कही थी कि आप इसके ऊपर वर्कआउट कोई प्लान बना के लाएं, कोई स्ट्रेटेजी बना के लाएं, तो वो सब चीज़ें आप उस एजेंडे के अंदर शामिल करते हैं और प्रायरली बोर्ड को बताते हैं कि जी हम ये चीज़ें इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे. और इस तरीके से बोर्ड अपने आप अपनी जो टाइमली 21 दिन पहले या 14 दिन पहले आप उसकी वो तैयारी करते हैं, अपना जो चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करते हैं उनको पढ़ के, ताकि फिर मीटिंग में टाइम और उसको कंक्लूड करके जल्दी से मतलब जो भी उनका स्केड्यूल है उसके मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकें. From a specialized committee with well-defined objective, authorities, and tenure. These committee, preferably comprising of non-executive board members, shall oversee areas like audit, risk, compensation, etc. The audit committee of the board shall be chaired by the independent director. कि ऑडिट कमेटी के आपका कोई ऐसा डायरेक्टर हो जो ना आपके शेयर होल्डर्स की तरफ से हो, ना आपकी मैनेजमेंट की तरफ से, या आपका नॉर्मल नॉमिनी डायरेक्टर ना हो, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो. These committee of the board shall not indulge in day-to-day affair operations of the company and shall apprise the board of their activities, finding and recommendation on regular basis. Ensure that permanent committee of the board have chartered approved by the board as a whole. Ensure that the audit committee of the board shall not include membership from the management. The audit committee must include an expert on accounting and financial analysis. It must meet the external auditors in the absence of the management. For transparency और clarity के लिए, ताकि कोई इस तरह का मतलब इसमें ambiguity हो कि कोई
बीच में आपकी मैनेजमेंट कुछ और फिगर्स दिखा रही है और एट द एंड कुछ और फिगर्स अप्रूव करवा रही है, ताकि क्लैरिटी हो। बोर्ड की ड्यूटीज में है कि इन्फॉर्म्स state of company, State Bank of Pakistan, something like that, at least 2 months ahead of the implementation, its decision to remove its president, chief executive officer before expiration of his term of office. एक सीईओ के साथ आपका एक एग्रीमेंट होता है कि जी वो 5 साल सर्व करेगा, 3 साल सर्व करेगा। उसके बाद अगर वो उससे पहले या उससे बाद कोई मतलब इन द मिडल कहीं भी, तो उसके लिए भी 2 महीने के आप टाइम एटलीस्ट स्टेट बैंक में इन्फॉर्म करेंगे कि आप अपने जो सीईओ है उसके साथ अगला जो एग्रीमेंट है उसको नहीं फर्दर करना चाह रहे, तो ताकि उसके भी जो स्टेट बैंक है वो वेल अवेयर हो कि आपकी कंपनी में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं और किस तरह से हो रही है। The chairman of the board of directors of the company shall be responsible for submission of the requisite information. The President, CEO, whenever decide to tender resignation before completion of his term in office, she must inform SVP at least 2 months before tendering the resignation. Board of Directors is required to undertake a year within 6 months of the issuance of these regulations to meet its newly prescribed responsibilities. Next is the main committees of the board. मेनली इसमें ऑडिट कमेटी है, रिस्क मैनेजमेंट है, कंपनसेशन कमेटी है, ह्यूमन रिसोर्स है, और इसमें आगे फर्दर और भी कई कमेटीज टाइम जैसे आईटी की हो गई, फाइनेंशियल इंक्लूजन की हो गई, और समथिंग लाइक दैट, और भी एक दो कमेटीज जो परफॉर्म कर सकती हैं। कुछ टाइमली सिर्फ कुछ किसी खास टास्क के लिए बनाई जा सकती हैं, और फिर वो अपने ड्यूटीज परफॉर्म करके तो उनको डिसॉल्व भी किया जा सकता है और कंटिन्यू भी किया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द बोर्ड। तो उनमें से चंद एक पे हम डिस्कस करेंगे। मेनली है ऑडिट कमेटी। It is mandatory that the audit committee shall be constituted by the board, keeping in view of the following requirement. The board shall establish an audit committee at least 3 members comprising of non-executive director and at least 1 independent director. Chairman of the committee shall be an independent director who shall not be the chairman of the board. The board shall satisfy itself that at least 1 member of the audit committee shall be financially literate. It's also mandatory that the meetings of the audit committee shall be held as per the following requirement. The audit committee of the company shall meet at least every quarter of the financial year. These meetings shall be held prior to the approval of the interim result of the company by its board and after completion of the external audit. A meeting of the audit committee shall also be held if requested by the external auditors, head of internal audit, or by chairman of the audit committee. The head of the internal audit and external auditors is represented by engagement partner, or in his absence, any other partner designated by the audit firm shall attend meeting of the audit committee at which issues, if any, related to accounts and audits are discussed. It is also mandatory that the board of every company shall determine the term of reference TORs of the audit committee. It is mandatory that the board shall provide adequate resources and authority to enable the audit committee to carry out its responsibility effectively, and the term of reference of the audit committee shall be explicitly documented. Audit committee will assist the board in fulfill its oversight responsibility by monitoring will review and assess the adequacy of the internal control system, risk management, the effectiveness of the financial reporting process, including as far as possible that annual consolidated
statutory financial statement follow approved accounting principles and give a true fair view of the entity results and status. The efficiency of the internal and external audit arrangement and the agency's method of the monitoring compliance with external laws and regulation and internal code of conduct. The role of the audit committee is defined as assist the board in fulfilling its oversight responsibility of the company's corporate governance processes, review the adequacy and effectiveness of the company internal control environment, including operational control, integrity, and adequacy of the financial reporting system, compliance and risk management framework, review and appraise the audit efforts of the company's external auditors and internal audit function. Review the company process of the monitoring compliance with relevant laws and regulation emanating from time to time. These are all the audit committee responsibilities and different type of duties which in laws, regulations like Companies Act and Banking Companies Ordinance. Next हमारी discussion है Human Resource and Remuneration Committee. There shall be a Human Resource and Remuneration Committee of at least 3 members comprising a majority of non-executive directors, of whom at least 1 member shall be an independent director. The chairman of the committee shall be an independent director and the chief executive officer may be included as a member of the committee. The committee shall meet at least once in a financial year and may meet more often if requested by a member of the board or committee itself or the chief executive officer and the head of human resource or any other person appointed by the board may act as the secretary of the committee. Chief executive officer, if not a member of the committee, head of human resource, if not the secretary to the committee, or any other advisor or a person may attend the meeting only by invitation. A member of the committee shall not participate in the proceeding of the committee when an agenda item relating to his performance or review or renewal of the terms and conditions of his services comes up for consideration. The TOR, the term of references of the committee shall be determined by the board. Other committees may nomination committee, risk management committee or IT या financial inclusion या आपके compliance committee. The nomination committee, the board may constitute a separate committee designated as the nomination committee of such member and class of director as it may deem appropriate in its circumstances. Risk management committee, the board may constitute the risk management committee of such member and class of directors as it may deem appropriate in its circumstances to carry out a review of effectiveness of risk management procedures and present a report to the board. Risk management play a crucial role in the various industries and organizations to identify, assess, and mitigate potential risks that could impact their operation, reputational, and financial well-being. So this is the end. So any question, answer, you may please. Thank you so much, sir. It was a very good presentation. Students, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. Preferably ये होगा कि आप अगर one by one पूछ लें, hand raise कर लें तो मैं अपनी turn पे पूछ लें. तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा. सर कैसे हैं आप? ठीक है जी वालेकुम सर. ये आपसे क्वेश्चन था कि कंप्लायंस ऑडिट और एसबीबी ऑडिट ये किस तरह होता है? सर जो एसबीपी ऑडिट है वो आपको पहले एक टाइम फ्रेम देता है. उस टाइम फ्रेम के अंदर कि आप सपोज देता है कि जून 2022 से जून 2023 तक मैं आपकी इंस्पेक्शन चाह रहा हूँ और उसमें फिर एक स्पेसिफिक फील्ड भी बताते हैं आपको कि आपको कंप्लाइंस पे ज़्यादा है या हम आईटी फील्ड को देखेंगे
या हम किसी और डिफरेंट एरिया को फोकस कर रहे हैं, और उसके अंदर फिर आपको एक TOR बना के देते हैं कि हमें ये डाटा रिक्वायर्ड होगा इस कस्टमर का, या एक स्पेसिफिक फील्ड क्या आपको चाहिए होगा। इसी तरह कंप्लाइंस में अगर वो जाते हैं तो कंप्लाइंस से रिलेवेंट जो चीज़ें हैं उसको आप वो प्रायरली आपको पहले बताते हैं कि जी हाँ, आपकी कंप्लाइंस में आपकी फला सबमिशंस देखेंगे, फला रेगुलेटरी आपकी रिक्वायरमेंट जो थी वो आपने फुलफिल की है या नहीं की है। मतलब उस पूरे आपको एक टेन्योर और उसके बाद अंदर एक स्पेसिफिक फील्ड में आपको इंगेज करते हैं और फिर उसी के ऊपर वो फोकस रखते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। एनीवन एल्स? अगर किसी का अस्सलाम कोई वालेकुम सवाल सर। है तो वो चैट में भी लिख सकते हैं, इंस्टेड अगर वो अनम्यूट नहीं करना चाहते तो चैट में भी लिखा जा सकता है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मैंने आपसे ये सवाल पूछना था कि डायरेक्टर जो रखे जाते हैं किसी जी कंपनी में, वो मुख्तलिफ कोटास में रखे जाते हैं। जिस तरह अ, जिस तरह ये मुख्तलिफ के मेल डायरेक्टर इतने होंगे, फीमेल डायरेक्टर इतने होंगे, इस तरह। मैंने वो आपको शुरू में बताया था कि रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 1 फीमेल डायरेक्टर हो, और आपके कितने % डायरेक्टर किस तरह होंगे उसमें ये मैं आपको दोबारा खोल के भी बता देता हूँ। एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ फीमेल डायरेक्टर। एक ही फैमिली से अगर है, मतलब एक ही आपने अपने मतलब एक फैमिली बिजनेस है आपका, उसको आप लेके चल रहे हैं और उसमें आप 25% से ज़्यादा एक ही फैमिली के लोग नहीं हो सकते। ओके सर, थैंक यू। जी। एनीवन एल्स? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर लें सर से। आई थिंक सर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको फिर एंड कर लेते हैं, हम जी कंक्लूड करते हैं। सर थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया और आपने अपना टाइम स्पेयर किया हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो इट वाज अ वेरी वैल्यूबल इन्फॉर्मेटिव सेशन, और आपसे तो हमें ये भी है कि हम प्रैक्टिकली सीख सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी कंफ्यूजन है, क्योंकि हम जी बुक्स जी से देख आप रहे होते हैं। बुक्स जी में बिल्कुल। तो थियोरेटिकली चीजें होती हैं, तो आप तो प्रैक्टिकली इसको देख रहे हैं। जी तो इट वाज अ बिल्कुल। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम इसको मजीद फर्दर देखते। ये दिस इज द फर्स्ट इंटरेक्शन दरअसल स्टूडेंट्स के साथ ना। ये सब्जेक्ट इस तरह का है कि ये ज्यादातर इन्फॉर्मेटिव है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा एक न्यू एक्सपीरियंस था कि उन्होंने पहली दफा किसी ऐसे स्पीकर के साथ इंटरेक्ट करें कि जो प्रैक्टिकली ये देख रहे हैं चीजें और जो नॉलेज रखते हैं प्रैक्टिकली इन चीजों के बारे में। तो जी ये भी एक सिनेरियो था। इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हम कोलैबोरेट करेंगे ताकि हम मोर गेट द एक्सपोजर ऑफ इट कि एक्चुअल में भी, यानी कि ऐसा नहीं है। नॉर्मली ये परसेप्शन होती है स्टूडेंट्स को कि ये एक्चुअल ऐसा बस हम किताबें पढ़ते हैं और ऐसा होता नहीं है। हालांकि आपने जिस तरह से इंफॉर्मेशन शेयर की है वो प्रैक्टिकली कोड्स आपने दिखाए हैं और कंपनी लॉज के बारे में बताया है कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। तो ये बात है। तो एक क्वेश्चन और था, उसको देख लेते हैं फिर हम इसे एंड कर लेते हैं। जिसने जी प्लीज। नहीं सर, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह विल इनवाइट यू इन द फ्यूचर एज वेल। बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया, मैं भी आपका UIMS का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।